Hello, my name is Himanshu Gaurav Singh. I cleared JEE Advanced 2019 and achieved a rank of 2nd. I want to tell you how MyPad helped me throughout my journey since the past 2 years. After reading or studying any concept in class, I used to go to my home and solve the online tests on those concepts particularly that were present on the MyPad portal, and that helped me to analyze what's the depth to which I've reached in that particular concept. Accordingly, I used to then plan my studies so that those loopholes are covered. हर टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर मैं हर कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद अगर कॉन्सेप्ट टेस्ट दूंगा माईपैड पे तो मुझे क्लियर हो जाएगा मुझे इस कॉन्सेप्ट में इस पार्ट में मुझे दिक्कत आ रही है, ये क्वेश्चन मैं बार बार गलत कर रहा हूँ, और मैं अगर उस कॉन्सेप्ट टेस्ट को फिर से दूंगा तो मेरा वो डाउट क्लियर भी हो जाएगा और मैं अपने टीचर से पूछ के उस डाउट को क्लियर करने में मुझे आसानी भी होगी. Whenever I had a doubt in a concept, I used to do a concept test for that concept, and if I had any question going wrong, then I would see from the MyPad analytics which topic that question corresponds to, and then I would read that topic and attempt the test again. The analysis was superb because it covered almost everything, and it also helps us to compare with the average marks and also the toppers marks, so that you are always motivated to do better than what you have done in the current test. In a test I saw that I had done a super tough kinematics question in 3 minutes, but the topper had taken 80 seconds to solve the same. So I checked out the solution for the question and knew that there was a better way also to do that. I got my analysis and well as the topper analysis. You know, I got through that. इतना अटैम्प्ट हो सकता था, तो मुझे अपनी पेस बढ़ानी है, थोड़ी स्पीड बढ़ानी है अटैम्प्ट करने की क्वेश्चन, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स कभी कभी पता चल जाता था. इस चैप्टर में भी मुझे लैगिंग है तो उसमें आता था कि ये चैप्टर आपका वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो वीक चैप्टर्स पे फोकस करने में मदद हुई. पिछले 2 सालों से JEE ऑनलाइन हो गया है तो काफ़ी हेल्प करा, क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में एकोमोडेट होना बहुत ज़रूरी है. नहीं, अगर सिर्फ आप ऑफलाइन टेस्ट करते रहेंगे तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो पाएंगे. लेकिन माईपैड ने ऑनलाइन टेस्ट दिए, मैं घर बैठे दे सकता था. मुझे एनालिसिस मिला और हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिला जो मुझसे नहीं हुआ या फिर जो मैंने गलत किया, तो इस बहुत हेल्प किया. मुझे पूरा वही एनवायरनमेंट मिल गया जो मुझे एक्चुअली मिलना था JEE एडवांस और मेंस में. I appeared for both the pre-JEE mains and pre-JEE advanced series, and they were almost the same level as JEE advanced. During the last phase of my examinations in both JEE mains and advanced, I also attempted the pre-JEE mains tests and pre-JEE advanced tests that were conducted online. Those tests also helped me to enhance my performance for the final day. Yes, I would strongly recommend it to my juniors. It has everything, you know. अगर आप माईपैड पे एनरोल्ड रहेंगे तो आपको पहले ही पता होगा कि क्या क्या चीज़ आगे आने वाली है और मुझे इस तरह ये सब करना है. I indeed recommend MyPad to all my juniors as it's an online portal that's very user friendly and indeed helps you to boost your performance on the final day.